अब हम एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग को डिटेल में देखते हैं। एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में टेस्टर टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। एक्टिव गैदरिंग पैसिव गैदरिंग के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है और वल्नरेबिलिटीज भी ज्यादा डिटेल में प्रोवाइड करती है। Basically, it uses tools that send the different type of packets and requests to the target system, and open ports, closed ports, operating system, services that are running on that system, infrastructure details, IP address range, vulnerable applications on a host are few examples of active information gathering. The main drawback of this approach is that direct interaction with the host has a chance of triggering the system's IDS or IPS, and it can alert the network administrator. Therefore, it is not a good idea to perform active querying against any system without the permission. अगर हम tools की बात करें तो Nmap is a free and open source utility for network discovery and security auditing. Nmap uses raw IP packets to determine available host on the network, open port services, basically application name and version offered by those hosts, operating system, packet filters, firewalls, etc. यहां हम रिजल्ट में देख सकते हैं कि पोर्ट नंबर 22 ओपन स्टेट में है और उस पे SSH सर्विस रन हो रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu है। Nmap हमें वल्नरेबिलिटीज को भी लिस्ट करके देता है। हम यहां देख सकते हैं कि वल्नरेबिलिटीज को CVE वाइज लिस्ट किया गया है एंड हम पर्टिकुलर CVE को डिटेल में CVE डेटाबेस के थ्रू भी देख सकते हैं। डिवाइस का टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल, ट्रेस रूट का आउटपुट भी यहां देखा जा सकता है। इसके बाद Nikto is a pluggable web server and CGI scanner. This is developed in the Perl language. It mainly detects security related issues in web scripts and the configuration of web server. It runs various tests like a fuzzer and displays unusual items which can be further investigated manually. Next, very useful and widely used tool for remote security scanning, which scans, targets and discovers vulnerabilities that the malicious hackers could use to gain the access, is NISIS. NISIS identifies vulnerabilities that allow remote attackers to access sensitive information of the system. NISIS uses web interface to scan and report the various vulnerabilities. It discovers network-based and local vulnerabilities, and also it audits mobile device vulnerabilities and perform port scanning. So till now we have discussed the role of information gathering in VAPT. We have seen some of the most popular tools for gathering the information. These tools can not only help in gathering the sufficient information, but they also help to increase the efficiency and effectiveness of the whole penetration testing process.